हेलो एंड वेलकम टू मास्टरप्रेन्योर, वक्त और किस्मत का खिलाड़ी। पिछले साल शुरू हुए इस बिजनेस टैलेंट हंट शो को हम आगे बढ़ाते हुए लेकर आ रहे हैं मास्टरप्रेन्योर का सीजन 2। अब तक आपने देखा है हमारा पहला मुकाबला साउथ जोन का, जहां से हमें मिले हैं 5 एंटरप्रेन्योर्स जो पहुंचे हैं सेमीफाइनल राउंड तक। लेकिन अब बारी है वेस्ट जोन की। यहाँ पर किस तरह का काम हो रहा है, कितने होनहार एंटरप्रेन्योर्स हैं, इसी को परखने हम पहुंचे हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में। तो चलिए मिलते हैं वेस्ट जोन के एंटरप्रेन्योर्स से। मास्टरप्रेन्योर सीजन 2 का रिस्पांस काफी बढ़िया रहा है और खासतौर से वेस्ट जोन में हमें मिली है लगभग 700 एंट्रीज। लेकिन इन 700 लोगों में से हमने चुने हैं 14 एंटरप्रेन्योर्स जिनमें पूरा दमखम है आगे चलकर मास्टरप्रेन्योर बनने का। इन एंटरप्रेन्योर्स को पहले मौका मिलेगा हमारी जूरी को इम्प्रेस करने का। तो चलिए मिलते हैं वेस्ट जोन के इन 14 एंटरप्रेन्योर्स से। वेस्ट जोन के प्रतियोगियों को चुनने के लिए जूरी में शामिल हैं संजय कपूर, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सोना कोयो, पार्वती मेनन, मैनेजिंग डायरेक्टर इनोवेशन एल्केमी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, PR गणपति, विल ग्रो इनोवेशन, सचिन बिड, इनक्यूबेट कैपिटल, सतीश सेल्वनाथन, एग्जीक्यूटिव इन रेसिडेंस फ्रेडॉर मलेशिया और CNBC आवाज की हर्षदा सावंत। वेस्ट जोन की शुरुआत करते हैं हमारी खास कैटेगरी स्पेशल एंटरप्रेन्योर्स के साथ ही, और सबसे पहले हमारे सामने पेश हो रहे हैं बैक फॉरएवर के मनीष केलशिकर। There is a huge amount of plastic is used and everything, and everybody said don't use plastic, but there was no solution everybody provided. Bag Forever is an answer to it. It's a foldable, fashionable, reusable bag, and it just carries 25 kgs, carries 4 grocery bags, and lasts for 1 year. Most important thing, it prevents 350 poly bags in a year. बैग बेचने के अलावा प्लास्टिक्स रिमूव करने का जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, उसमें आप क्या कर रहे हैं? Currently, if you see, most of the plastic bags are actually eventually thrown in garbage. So the whole idea was to replace and reuse. How do you calculate your market size? Women is a target market. Okay, so there are overall 111 million women. Urban women. Urban women. Okay, that is exactly the market size. Where one bag per woman, entire year, it's 1,000 crore market. Yeah, So coming duty-free, more from a perspective of co-branding. buying them, and branding. The next big thing is co-branding, of course. See, the whole idea is about reaching to maximum households through multiple ways. We have nicely packaged remnants of old cotton clothing for cleaning and the wiping industry. The next big venture is all set to take on the traditional pocha as a better and cheaper cleaning option. आप तक मटेरियल पहुंचता कैसे? We are allowed to import from the first world. There are specific traders. It's a very small community, so the sourcing is not very difficult. It's in the hand of a very few people. लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्ट होता है ये जो ओल्ड टेक्सटाइल। जी, फिलहाल तो इम्पोर्ट हो रहा है इन दी SEZ. तो आप डायरेक्टली ग्राहकों के मेंटल एटीट्यूड्स को चेंज करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। आपका ज्यादातर बिजनेस B2B है, जहाँ पे रिटेलर्स आपकी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, करेक्ट? We Indians, generally like cheap. सस्ता होना चाहिए। ये लोग देख रहे हैं कि ये सस्ता है, तो इसमें जो इसमें गुण है उसकी तो they care little bit. That is why इसका जो वैल्यू है फिलहाल तो फर्स्ट वर्ल्ड में है, और यहाँ पे it takes a flood or it takes a calamity for everyone to wake up. And I hope we wake up faster than waiting for a calamity. We have now 25 schools and preschools. Those 25 schools and preschools are spread across 8 cities and towns. And these are currently housing around 2,500 learners. किस इनकम ग्रुप के लोग आपके पास आते हैं? पेरेंट्स के क्या इनकम ग्रुप होगा? So middle class, I would say, and again, this, as I said, because we are in so many different geographies, the look and feel of this parent is very different. So the subjects that they learn are similar to what they would in a regular school. I'll give you an example. In our school in Navi Mumbai, we have a lot of our kids come by cycle. So cycle is a very important, very integral part of their lives. So we said, what are the things that they're studying in their curriculum that can be taught by means of a cycle? And one of the things was, so if you think about physics, speed is one that comes
to mind. So we said, okay, let's do a cycle race, and then we did a cycle race, and there was someone who's racing and there's someone who's keeping time. And when the kids understand that at this level that the guy who won got it in less time, then they don't have to memorize the formula speed is equal to distance upon time. स्वयं शिक्षण प्रयोग ऑर्गेनाइजेशन पिछले 21 साल से हमारे क्षेत्र में काम कर रहा है। मैं उसी क्षेत्र से हूं। स्वयं शिक्षण प्रयोग ने मुझे 6 साल पहले कहा कि आप अलग से एक कंपनी शुरू करो जो नॉन प्रॉफिट है। उसके अंतर्गत हम 2 तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। एक है महिलाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। अब तक हमने 5000 महिलाओं को ट्रेन किया और 1157 यूथ को ट्रेन किया। उनमें से 700 लोगों को नौकरी भी दी है। तो आपके ट्रेनर्स कहाँ से आते हैं? जी सर, एक तो ट्रेनर लोकल से हम लोग अरेंज कर रहे हैं, जैसे कुछ एक्सपर्ट या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी कुछ लोग आना चाहते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी हम लोग ये चुनते हैं कि जैसे ट्रेनिंग होता है उसी में हम पोटेंशियल ट्रेनर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो 2-3 ट्रेनिंग के बाद में उनको हम कॉल करते हैं। उनका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है उनको नए ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आप उनको सिखाते क्या है? जी सर, मेन सब्जेक्ट क्या सिखाते? सर मोटिवेशन, बिजनेस प्लान, मार्केटिंग अप्रेजल, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें सिखाते हैं। अंत में हम बिजनेस प्लान सिखाते हैं सर। क्योंकि अभी 5000 महिलाएं इसमें ट्रेन हो चुकी हैं, तो इस नेटवर्क को आप लीवरेज कैसे करते हैं? इस नेटवर्क में और क्या बहता है? मैडम, मैं ये बताना चाहूंगा कि उनमें से 850 से ज्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हमने स्पेशली ट्रेन किया है जो ग्रीन प्रोडक्ट्स बेचती है, जैसे सोलर लाइट्स। तो 400-500 रुपए से लेकर के 5000 तक का सोलर लाइट। तो ये ट्रेनिंग हमने ये दिया है कि क्लीन ग्रीन प्रोडक्ट्स आप गांव में बेचो, लीड जनरेट करेंगे, आपको उसका जो भी कमीशन है मिलेगा। The work which we do concentrates on career counseling to students from grade 8 to 12, with mapping them to their interests, personality and aptitude right from standard 8, with subjective scholarship alerts, career entrance exams and so on. So far, in our analysis, from the students which we have reached, 28% of students got the career and scholarships which they deserved and which they wanted. मान लीजिए आपने 100 स्टूडेंट्स को काउंसलिंग की और केवल 28 वो कर पाए जो काउंसलिंग के अंतर्गत उनको निकल के आया, बाकी नहीं कर पाए, तो क्या वो एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन नहीं क्रिएट करता है? उसको आप कैसे डील करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं? तो रूरल स्टूडेंट्स में हमें ये बात पता चली कि वो लोग कॉलेज को ही नहीं जाते थे। तो ये 28% तो वो है जो अपनी अपॉर्चुनिटी ले पाते हैं, वो स्कॉलरशिप ले पाते हैं। पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं करियर डेवलपमेंट, करियर काउंसलिंग में, कि सिर्फ स्टूडेंट्स? मैं आपको हमारी प्रोसेस बताता हूँ। पहले हम ओरिएंटेशन करते हैं जो लगभग 3 घंटे का होता है। उसके बाद में हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं जो 2 घंटे की होती है, जिसमें सारा उनसे सवाल जवाब होता है। उसके बाद 1-on-1 काउंसलिंग होती है जिसमें कि स्टूडेंट और पेरेंट दोनों को आना होता है और स्टूडेंट और पेरेंट दोनों आता है। रूरल एरियाज में हमने बहुत देखा है कि एक ही सिंगल पेरेंट आता है, ड्यूअल पेरेंट नहीं आता है, और जनरली इट्स फीमेल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ फ्रॉम द फैमिली। सो वी हैव टू कन्विंस मोर एंड पुट आवर एफर्ट्स इन कन्विंसिंग दैट पेरेंट। और फिर चौथा होता है हमारा SMS अलर्ट, जो हम स्टूडेंट को भेजते हैं, पेरेंट को भेजते हैं और वहाँ के प्रिंसिपल को भेजते हैं, सो दैट दिस अपॉर्चुनिटी इज नोन टू ऑल द स्टूडेंट्स। इस तरह से हम प्रोसेस करते हैं। We go to rural areas, we organize training camps, and we train the people in beekeeping. It takes a day or two to equip those guys with the training, with the knowledge that they need to start the beekeeping. Once they are equipped with it, we give them bee boxes. As of now, we are giving it free of cost, and also we provide them support as and when required. And those people, they do beekeeping, and we buy back the honey from them at a predetermined price. So ultimately, the rural people gain employment and income through this initiative. खादी विलेज इंडस्ट्रीज के एक फिक्स रेट होते हैं बी कॉलोनीज को एक्वायर करने के, एंड ऑफ कोर्स उसको बीट करने के लिए आपको काफी बड़ा दाम देना पड़ता है। तो कितना हायर मार्जिन आपको पे करना पड़ता है, हाउ इज इट अफेक्टिंग योर बिजनेस? एक्चुअल रेट्स मैं आपको बता देता हूँ। सो CBRTI और KVIC has fixed the rate of Indian colonies to be like 2000 rupees. The colony is just the bee colony, the beehives. You need a bee box also. So with the bee box, it comes out to be 4000 something. The entire unit should come to 4000 from KVIC or CBRTI, whichever authority. And they claim a subsidy of 25% on it. So it should effectively cost you 3000. Currently, I pay 6,500 to 7,000. अंडर द मैंगो ट्री का नाम सुना होगा, वो तो इसी मॉडल फॉलो करते हैं, काफी साल से करते आ रहे हैं, उनको काफी एक्सपीरियंस है, मार्केट प्रेजेंस है।
तो आपका और उनके डिफरेंस क्या है, आप उनको कैसे चैलेंज करेंगे? So under the mango tree का सबसे पहले they work only for the farmers. I have not read anywhere that they work for Adivasis. We work for Adivasis also, and the product is priced at a very high end. Okay? It is not available for a normal person, so it's not available in Big Bazaars or D-Marts. It's available only in Nature's Basket. So that's why what I was trying to bring in, that it is not available for the masses. We are trying to build in a product which is available for masses. वेस्ट जोन के सोशल एंटरप्रेन्योर्स ने पूरी जूरी को काफी प्रभावित किया अपने बिजनेस आइडियाज के साथ, लेकिन अब वक्त हो रहा है नतीजे का। यहाँ से कुछ ही एंटरप्रेन्योर्स हमारे अगले राउंड के लिए जाएंगे। संजय, कौन से होंगे? It was a very difficult task for us to just choose 3. Well, this is how it goes, unfortunately. And each one of you have got a phenomenal business, and you put a lot of passion and a lot of hard work into it. And you've made it this far. We had 1,800 applicants this year in the show, so even making it this far is quite an achievement. And in no particular order, the 3 businesses that we chose to go forward into the semi-final round. The first one is Fuel, right? Saki Social Enterprise, and Be the Change. अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कंटेस्टेंट्स को परखने का सिलसिला जारी रहेगा। आई गेव यू अ वेरी बढ़िया बुद्धि टाइप कि मैं आपसे लूंगा, जेरोक्स करूंगा, सबको दे दूंगा, खत्म हो गया बात यार। वेलकम बैक टू मास्टरप्रेन्योर सीजन 2। हम बात कर रहे हैं वेस्ट जोन की और यहाँ से हमें मिली है ढेरों एंट्रीज। सोशल एंटरप्रेन्योर्स ने हमारी जूरी का दिल जीत लिया है, लेकिन रेगुलर बिजनेसेस, कोर कमर्शियल बिजनेसेस की अब बारी है। देखते हैं इन एंटरप्रेन्योर्स में कितना दम है, कितना जोश है हमारी जूरी को इम्प्रेस करने का। बेसिकली जो मिल्क नेचुरल फ्रेश मिल्क हुआ करता था 40-50 साल पहले, जिससे पहले पूरा कमर्शियलाइजेशन और रेवोल्यूशन हुआ, उससे पहला जैसा मिल्क हुआ करता था, हमारा मकसद है कि हम वो लोगों तक पहुंचाएं। विजन दैट वी हैड was that we want to provide the gold standard of quality in milk and milk products in India. What we did was, in our research, we came up with a set of standards which we call the Dr. Moo standards, which we wanted to have in any farm from which we would start our sourcing. And we went around India to look for such farms. Finally, we zeroed in on one farm in Maharashtra. We set the standard operating procedure over there, got them organic certification, and then started this service for Mumbai. And how much of a premium is the milk price tag? So it's about 30%. Higher than the regular milk? Higher than, so the regular milk would be about 45 rupees a litre, and this is at 60 rupees per litre. Let us just break it down. Sourcing, processing, distribution and brand. In each of these areas, how are you building a different business? My effort on sourcing is paramount, and what I do is that I keep on identifying farms and people who are interested in getting into the clean milk business. Then on the processing side, so we never will take the risk of transporting loose milk. So the milk has to be pasteurized and packaged at the farm facility itself. What are your targets for scale? So how soon will you be doing that? Sure. So I want to reach about 1 lakh litres a day, and that I plan to do in 5 cities: Mumbai, Pune, Delhi, Hyderabad and Bangalore. And that I plan to reach in the next 5 to 6 years. Run a platform called dwell.in, dwll.in. We take your information and then we do the matchmaking between you as well as the designers that make sense for you based on geography, budget, kind of designs you are looking for. If you have any religious sensibilities, if you have other constraints, somebody who has designed an office before. So you take responsibility for quality, right, of the design, yes, of the interior decorator. Right. How does that work? Because these are 2 human beings interacting with each other. Relationship goes bad. Right. How does that affect your business in the long term? Or what is your recourse if I recruit an interior designer and you have been a part of the discussion? जो आपको पता नहीं है कौन किससे क्या कहा? Actually, a few points that I'd like to mention there. So one is it's a curated network. So people who come on the platform, you create a profile, and there's a review. So there's a formal review of the profile. Secondly, over time, so we also want to build, feedback into it.
So that's where we are coming from, that we will help you find people from a curated network. So there is responsibility because these are the people that we have let into the community. अगर एक कंटिन्यूम देखा जाए और एक कॉर्नर में जस्ट डायल है लिस्टिंग सर्विसेज, दूसरे कॉर्नर में डेटिंग साइट्स, शादी.com एक्सेट्रा, लॉट ऑफ मैच मेकिंग, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नेसेसरी है, आपका कोर कॉम्पिटेंस आप कहाँ बैठाएंगे, कहाँ पर है? See, Shadi.com is not much as matchmaking because the onus is on you. So Shadi.com as a platform doesn't facilitate that. You can filter people, you can reach out to people. What we are saying is we are actively involved. We do the matchmaking. If you're not satisfied, then we will still work with you and we will find you somebody till we actually do the matchmaking for you. I click the photo, I keep the package ready, I wait for 3 days. You take the snap, you pick up, give your pickup address, your delivery address, you say what services you want, and this inquiry is created on our portal. Agarwal will send me somebody who will actually make that inventory and give me a quote. So why add to the amount of work? So it's so unproductive, right? Agarwal Packers and Movers, that we are not sure whether they're going to win this order, right? You might have done that with n number of service providers. क्या प्राइस डिफरेंस है यार? अग्रवाल आ गया घर पे और आपने अपनी सर्विस, क्या प्राइस डिफरेंस है? So if you will go through the traditional mediums of discovering a packer and mover, you can get anywhere between 50 to 65% discounting on our portal through the bidding technology that we are using. मेरा बिजनेस है classesnotes.com, जो कि एजुकेशनल पोर्टल है. यहाँ पे हम विविध अलग अलग प्रकार के जो क्लासेस नोट्स होते हैं वो बेचते हैं. नोट्स आप तक पहुंचते कैसे हैं? क्लास के नोट्स? Yeah, so what we do is we go to the educational institute, do exclusive tie-ups with them, and get the notes from them. Explain to us how you aggregate these notes. You know. So once you post the classes note to us, we'll have a proper system in place, process in place, where we'll have a dashboard given to you where you can put your notes. You know, there is enough distribution penetration. These are accessible, right? So why this is just a alternate distribution. Yes, available. Yeah. So I want students to get notes, not just get notes, hoard notes. What will I ask you? How many students do you have today on the platform? Yes. How many students do you have? So currently we have very less number, but that's the problem. Yeah. So now nobody will sign up. I gave you a very बनिया बुद्धि टाइप कि मैं आपसे लूंगा, जेरोक्स करूंगा, सबको दे दूंगा, खत्म हो गया बात यार. Why do I have to, मतलब मेरे सोसाइटी में there are 50. The assumption that people hoard notes. Yeah. In your time, maybe people didn't want to share notes. Yeah. I guess today everything's so available on the net. So easy. It's all democratized, yaar. I have developed farmers throughout India, right from Uti to Nainital. We are into exotic vegetables. तो उन फार्मर्स के पास आप मार्केट लेके जाते हैं इन दैट सेंस और उनको बोलते हैं कि आप ये सीड्स उगाएं और इस तरीके से उगाएं तो आप उसको फिर बायबैक. Yeah, buyback guarantee, fixed rate throughout there at scheduled. ये होटल्स टाइम पे पैसा देते हैं क्या आपको? Payment, I should not name the hotels, but some of the best paymaster आँख बंद करके उसके दूसरे दिन आप दूसरों को चेक दे सकते. Some of very bad paymaster. कितना दिन है? 45 दिन, 60 दिन, कितना दिन है? वही एवरेज निकाला जाएगा ना, नॉट बिफोर 60 डेज. अब वक्त है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी कंटेस्टेंट्स को परखने का सिलसिला जारी रहेगा. वेलकम बैक टू CNBC आवाज. आप देख रहे हैं मास्टरप्रेन्योर सीजन 2 और आज हम मिल रहे हैं वेस्ट जोन के प्रतियोगियों से. आइए मिलते हैं यहाँ के कुछ और होनहार एंटरप्रेन्योर से. We are a digital signage and LED video wall solution company. The uniqueness about our company is we have a mix of hardware, software and content. So hardware we typically import from China and Taiwan. We assemble it here. We have a workshop in Bhiwandi and in Baikala. Okay, barriers to entry kya hai? So as I said, there is nobody who can do all three.
there are people who do hardware, जो hardware में बहुत अच्छा करते हैं. आपके कोई competitors नहीं है इंडिया में? People not who do all three. What unique? You have technology unique. You have hardware sourcing which is unique. You have service which is what is unique? So a couple of things unique about us. One is the business model, that hardware, software, content, one-stop shop. That is unique. Second, even the software part of it. This is a media player that you put it behind any of your television screen, and it becomes remotely controlled screen. Are you saying this is a little exciting? Yes. So are you saying there are million screens in India? There are million screens in India, and at one location, I can actually say that these are the properties that I own. Yes. And Sanjay is sitting with you, and he says, "I want to publish this product on these million." Who owns this million screens? You own it. You own the space. So we are not a company who own the media. We are a company who create the media and hand over the control to the owner. कोई कंपटीशन नहीं है आपके बिजनेस में? 99 रेंटल्स या indiahomes.com? They're there, they're present in the market, they have an 8 to 10 year head start on us, but at the same time they've not been able to achieve the numbers that we are already achieving without any marketing, without any ATL, without any BTL. We have 1 lakh unique visitors coming onto our portal every day. Give me some statistics. How many people stay for how long on your site? How many are coming because it's housing.com? We've not really focused on monetization in the last 2 years, and I can't get into specifics right now. But what I can tell you is, we've partnered with over 20,000 agents pan-India. We've partnered with 150,000 landlords pan-India. We have over 300,000 verified listings on our website right now. There are 12,000 new projects on our website right now, and 3,000 plot projects, which is a category that other players don't even have. What is your brand promise? One line to describe trust. Expand on that. We are a trustworthy, reliable, empathetic company which will clean your home the way you would like us to clean your home. We have always believed that cleaning is logical. So a person who cares is a better cleaner than a technician who doesn't. तो पहले से ट्रेनिंग सेशंस जो हमारे होते हैं, कॉन्वर्सेशंस होते हैं, वी ट्राई टू मोटिवेट देम, आप ये जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इससे क्या इफेक्ट होगा, कस्टमर आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, तो आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए, राइट फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव. I'm still not clear on what the hammer and mob edge is. A brilliant, you talk about trust, yes, I get that. But really, what does that mean? A brilliant cleanup. You don't have to think about, you don't have to worry when you get in touch with Hammer and Mob for a cleanup, or in the future any property need. We will be at your fingertips. We'll understand all your requirements and it will be there. How many customers are you servicing और उसमें से कितने repeat clients? More than 3,000 और 60% repeat customers. तो आपकी ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू B2B से आता है या B2C? B2C. B2C से 80%. आप सबसे बात करके काफी मजा आया है, काफी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस हैं आपके. कौन यहाँ से आगे बढ़ेगा वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जूरी से भी सुन लेते हैं उन्होंने आपके बिजनेसेस के बारे में क्या सोचा है, क्या समझा है. सतीश, स्टार्टिंग विद यू. Personally, from my point of view, I had a lot of fun. I learned a lot from you. So, congratulations to you all. It's so exciting to see कि आज जो हम बोलते हैं कि ये टाइम इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत exciting है. It's clearly demonstrated, right? So really exciting to meet all of you. I always say entrepreneurs are mitigators of risk. They find an area where there is a risk in the system and they mitigate that risk by displaying their passion. And it's people like you that help us take this journey forward for Masterprenuers. अभी तक आप लोगों ने कुछ सफलता पाई है, उस सफलता से सीखना और उसके बाद यूनिक जो प्रॉब्लम्स हैं, कठिनाइयां हैं, कस्टमर इंसाइट लेके अपने बिजनेस को अगले लेवल पे लाने के लिए आप लोग सब अभी तैयार हो रहे हैं. उसके लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक. Entrepreneurship is tough and you all have crossed that barrier. My only suggestion would be start from niche before thinking an India business or a global business. Build some winning case studies, build some winning customers, and then take it step by step. यहाँ से हम 3 लोगों को आगे ले जाने वाले हैं हमारे सेमीफाइनल जोन में, जो मास्टरप्रेन्योर के पद तक एक कदम पीछे है.
उनमें से है एक्सट्रीम मीडिया, डॉक्टर मू, वी लाइक द मिल, एंड हैमर एंड मॉप। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारे वेस्ट जोन का मुकाबला, लेकिन अगले हफ्ते हम रुक करेंगे ईस्ट जोन। कोलकाता में मिलेंगे ईस्ट जोन के एंटरप्रेन्योर से। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ और देखते रहिए मास्टरप्रेन्योर सीजन 2।